नमस्कार, आप सबको प्रणाम। स्नेहांकित हेल्पलाइन दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था। स्नेहांकित हेल्पलाइन ने इस बार ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया था। मई महीने का दूसरा मदर्स डे, जून महीने का तीसरा फादर्स डे यानी आज का दिन, और 27 जून को हेलन केलर डे मनाया जाता है। इन महत्वपूर्ण दिनों के अवसर पर इन कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत लास्ट सैटरडे यानी 12 जून को टैलेंट शोकेस कंपटीशन से हुई, जिसमें 10 सालों तक बच्चों ने हिस्सा लिया था, अपनी कला पेश की थी। दूसरी कंपटीशन उसी दिन हुई, हाउ वेल डू आई नो माई पेरेंट्स। 10 से 18 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। माता पिता अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर क्या बच्चे माता पिताओं के बारे में जानते हैं? तो उनके बारे में बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने उनके जवाब दे दिए थे। तीसरी कंपटीशन खास मदर्स के लिए थी। वह रविवार 13 जून को दोपहर में हुई। स्प्राउटेड सीरियल से उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स बनाए थे और उनके वीडियो हमें भेजे थे। और चौथी यानी आखिरी कंपटीशन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, मल्टी क्विज कंपटीशन। इन सब कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट 27 जून यानी नेक्स्ट संडे हेलन केलर दिन पर बताए जाएंगे। उनका समय आपको बताएंगे और लिंक भी भेजी जाएगी। इन सब कॉम्पिटिशन्स में जिन्होंने हिस्सा लिया था उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, और हमारे स्नेहांकित के जो भी वॉलेंटियर्स, हमारे डोनर्स, वेल विशर्स और प्रोग्राम देखने वाले सब दर्शक, उनका मैं स्वागत करती हूँ। अब थोड़ी देर में मल्टी क्विज कंपटीशन शुरू हो जाएगी। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सबको ऑल द बेस्ट। मैं श्रीमती अनारकली वेलकर को विनंती करती हूँ कि वे इस कंपटीशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंगलताई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्नेहांकित की ओर से मैं आप सबका स्वागत करते हुए, तो जैसे उन्होंने बताया, अब आज हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी प्रतियोगिता की ओर, जो है मल्टी टॉपिक क्विज कंपटीशन। और ये हमने एज ग्रुप 18 to 40 के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और आप सबका रिस्पांस देखते हुए हम और भी प्रेरित हुए कि भविष्य में ऐसे और कॉम्पिटिशन्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करें। और जूम होने के कारण हमारे कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हो सकते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी आ सकते हैं, तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो कंपटीशन शुरू करने के पहले मुझे आपसे कुछ एक छोटी सी बात कहनी है। जीत सबको अच्छी लगती है, पर उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सचिन तेंदुलकर, जो हमारे सबके चाहते खिलाड़ी है, जो उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में बताया था, उसको फॉलो करो। चेज योर ड्रीम्स,
बट डू नॉट फाइंड शॉर्टकट्स, यानी अपने सपनों की का पीछा करो, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो। तो चलिए अब हम शुरू करने जाएंगे हमारा कंपटीशन। फिर से एक बार आपके लिए मैं रूल्स पढ़ के दिखाऊंगी। कल कई पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, आज कई नहीं है, फिर भी मैं आपको रूल्स पढ़ के बताऊंगी क्विकली। 16 पार्टिसिपेंट्स हमें नाम दिए थे 16 पार्टिसिपेंट्स ने, उनको हमने 4 टीम्स में डिवाइड किया है और 4 पार्टिसिपेंट्स के साथ, और हर एक पार्टिसिपेंट को नाम दिया गया है A1, A2, A3, A4, और सेम गोज फॉर द अदर टीम्स की B1, B2 एक्सेट्रा। तो जब मैं किसी टीम को क्वेश्चन पूछूंगी, तो सब पार्टिसिपेंट्स प्रश्न को सुनना है। रिमेम्बर, मैं ये जो पॉइंट बोल रही हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज है, कल जो रूल्स बोलते हैं उसमें से। मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आपको सुनना है केयरफुली, ऑप्शंस भी केयरफुली सुनने हैं, ध्यान में रखने हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी वो ऑप्शंस। फिर हर एक पार्टिसिपेंट को 15 सेकेंड दिए जाएंगे कि वो विचार करे उत्तर कौन सा करेक्ट है उन ऑप्शन में से। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हर प्रश्न को ऑप्शंस नहीं रहेंगे, पर जिनमें ऑप्शंस रहेंगे आप उन ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान में रखिए, और करेक्ट आंसर जो आपको 15 सेकेंड्स दिए जाएंगे उनमें आप थिंक करके रखना। फिर मैं हर एक पार्टिसिपेंट को ईच टीम के 1, 2, 3, 4 लाइन में पूछूंगी, तब आपका उत्तर देना है। और जब आप एक ऑप्शन माइंड में रखते हो और जब मैं पूछती हूँ आपको उसका उत्तर, आप बोलते हो ऑप्शन 1। इतना काफी नहीं होगा कि आप बोलो मुझे ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, क्या मैंने बोला था, वो आपको रिपीट करके बोलना है, क्योंकि आपको वो आंसर करेक्ट लगा था, इसीलिए आपने वो ऑप्शन चूज किया। तो आपको बराबर मालूम होना चाहिए ये ऑप्शन में क्या था मैंने बोला। हाँ, और उसमें से कोई भी पार्टिसिपेंट अगर करेक्ट आंसर देता है तो उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट करेक्ट आंसर के लिए भी ऑप्शन जरूरी है कि करेक्ट बोले। स्टॉप वॉच के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद 15 सेकेंड्स का स्टॉप वॉच चालू होगा, टाइम शुरू होगा आपका विचार करने के लिए। उसके बाद 15 सेकेंड्स के बाद मैं आप सबको एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगी। अगर कोई टीम को उत्तर ना आए तो क्वेश्चन अलग दूसरे टीम को पास ऑन नहीं होता है, 0 पॉइंट्स मिलते हैं उस टीम को, बट दूसरा टीम उसको आंसर नहीं कर सकती है। हर करेक्ट आंसर को 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर चारों पार्टिसिपेंट्स ने उत्तर करेक्ट दिया तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं, आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और जैसे ये मल्टी टॉपिक क्विज है तो ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे। समीर लाटे सर और सुब्रता सामंत मैडम हमारा स्कोर रखने वाली है। एट द एंड ऑफ ईच राउंड समीर सर स्कोर अनाउंस करेंगे, और एट द एंड सभी राउंड्स के एंड में टीम विद द हाईएस्ट टोटल, जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर हो वो टीम विनर डिक्लेयर हो जाएगी। बट जस्ट इन केस दो टीम्स का स्कोर लेवल रहेगा, सेम रहेगा, तो मैं दोनों टीम को क्वेश्चंस पूछूंगी टाई ब्रेक करने के लिए, यानी विनर डिसाइड करने के लिए मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। और उसके बाद भी अगर कोई टीम दो टीम्स का स्कोर सेम रहे तो वो दो टीम्स जॉइंट विनर डिक्लेयर किए जाएंगे। और ये तो अभी आपने देखा ही कि सब पार्टिसिपेंट्स आज भी लॉग इन नहीं हुए हैं, सम आर मिसिंग, बट that is just bad luck. We have to continue as many participants in each team there are. So some teams may have 2, some may have 3, some may have 4.
Some may have just one, but we have to continue in this way. Okay? और हमने तो रीनेम किया है, वीडियोस ऑन रखना है, म्यूट पे साउंड रखना है जब कंपटीशन शुरू है और आप आंसर नहीं कर रहे होंगे तब आपको वीडियो साउंड ऑफ रखना है. तो अब हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट राउंड. उसका नाम है एब्रीविएशंस राउंड, यानी शॉर्ट फॉर्म्स. मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताऊंगी और आपको उनका फुल फॉर्म बताना है. मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको. सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. ओटीपी. ओटीपी हमने बहुत सुना है. कुछ भी रजिस्टर करना है, कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन करना है तो हमको ओटीपी आता है. हमारे फोन पे हमको ओटीपी आता है. तो उसका फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड. ऐसा ये जो हम रेगुलरली यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, वही आपको पूछे जाएंगे. कई सवाल थोड़े कठिन रहेंगे, बट ये कंपटीशन है तो इजी एंड टफ दोनों क्वेश्चंस आपको आंसर करने आने चाहिए. ओके, तो शुरू करते हैं हम टीम ए के साथ. एब्रीविएशन राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन. टीम ए, आप अच्छे से ध्यान दीजिए. मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा के दिखाती हूँ, सुनाती हूँ. What is the full form of STD? STD. मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको. ऑप्शन 1 है स्टैंडर्ड डिविडेंड. ऑप्शन 2 सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. ऑप्शन 3 स्टैंडर्ड टाइम डेफिनेशन. ऑप्शन 4 simple tax deduction. And your time starts now to think. Okay, so team A, A1. Yes, my option is C, standard time definition. Okay, A2. B, standard, B option. What is that? What is that full form? Trunk call something that. Yeah. The A3. Option C, What is the option C according to you? national time. A4. Option C. What is option C? Huh. Okay, the time is up. But we will give their team 5 points because I think A2 answered correctly. The correct answer is subscriber trunk dialing, STD. Okay. So there is another question again for team A, which is also an abbreviation. So what is the full form? सुनो, इसमें आपको options नहीं दे रही हूँ मैं. ऑप्शन फुल फॉर्म ऑफ विप्रो. हम हमेशा सुनते रहते हैं विप्रो कंपनी का नाम. WIPRO. विप्रो का फुल फॉर्म क्या है? टीम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. थिंक. Okay, team A4 now. Team A, A4, would you like to answer first? It's a little tough, I know. A3. Madhav Naik, A3. A2, Rahul Singh.
No, ma'am. No idea. And A1, Yes, ma'am. Western Indian product. very good. Very good. That's the correct answer. So they get 5 more points. So we now move on to team B. Dhanashri, you can, you want to spotlight them? And then Yes, ma'am. I will read out the questions. Okay. अजून A3 राहिलं. Is there only one participant in team B? Yes, ma'am. Only one participant? So Kiran, everything is on you to. Okay, what is the full form of DTP? Desktop publishing, desktop production, desktop privacy, device testing process. DTP, What is the full form? device testing Okay. process. No, you can think. You take some time to think. Take some time to think. Dhanashri, put the. If you want, I'll just repeat the option for you. Desktop publishing, desktop production, desktop privacy, device testing process. Madam, I guess device testing process. I will go with option number 4. No, the answer is wrong. So the correct answer is desktop publishing. So there is one more question for team B in abbreviations. You hear this every day. Amul, you eat Amul butter. There is Amul cheese, milk. So what is the full form of Amul? A-M-U-L, Amul. Oh, There is A4 also. No, A2. No idea? no, madam, no pass. Okay, the full form is Anand Milk Union Limited. So now abbreviations for team C. Next team. Yes, ma'am. So how many are there in team C? Vijit, Yes. Vinayak Patil, and who else is there? Vishwajit Virare. Anarkali, madam. Okay. Please so I will ask read everybody. the Anarkali, please ask everybody to put off their Please mics. put your sound on mute, and only when you are answering, put them on. Okay. Vinayak Patil also, please mute it. Yeah. So I'm reading out the abbreviation. What is the full form of SIM? Say that every day, SIM card. So what is the full form? I'm giving you the options. Subscriber identification or identity module. C. Send important email. 2. 3. Subscriber information method. 4. Somebody is prompting someone at the participant's end. I can hear someone telling them. The 4th option is system information management. So take time. Your time starts now to think. Okay. C1. Who is C1? Vishwajit. Hello, ma'am. I am Vishwajit. What is and the correct answer?
The answer is really very easy. Option one, subscriber identity module. C2. C2. Sagar Khairnar. Option D. Huh? Option D. Option what? Mm, I can't hear you. And when you say that option, you have to tell me what you think it is, not just saying option 1, 2. option याद नहीं आ रहा मैडम. ऑप्शन पढ़ के एक लास्ट टाइम बताती हूँ आपको. सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सेकंड सेंड इंपॉर्टेंट मेल्स, थर्ड सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मेथड, फोर्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. System information management. Okay, then Akshay Kumar Dubey, he hasn't come, I think. Sandeep Bachao, नहीं है, दोगस है. Okay, anyway, the correct answer was given by Vishwajit Girare. It is subscriber identification module or subscriber identity module. So team A gets 5 points. Dhanashri, the correct answer. So we move to the second question in abbreviations to team C. What is the full form of NEFT? You hear everyone saying we'll do a NEFT transfer thing. So what is the full form? Dhanashri, start the timer. Give them 15 seconds to think. So, okay. Sagar Khairnar, please answer. Pass, madam. Vishwajit. Ma'am, I only know front transfer, electronic fund transfer. So what does the N stand for? I don't know, madam. Natural electronic fund transfer. No. Anyway, it's okay. Half your answer is correct. So maybe we'll give you the 5 points. I'm not being very strict. Okay. It is not natural. It is national electronic funds transfer. So we'll give team C also points for this. Let's move to team D. Who all are there in team D? Akshay Bhandari is there. Yeah. हाँ madam. Yeah, Akshay Bhandari and Sushant. Sushant, there is somebody with you. Okay, what is the full form of CBSE? I will read out the options. Listen carefully. 1. Common Board for Secondary Education. 2. Central Board of Secondary Education. 3. Code for Business and Statistical Education. 4. Center for Business and Statistical Environment. Your time starts now to think. Central Board of 1 minute, I will ask you. Let the time Hello? over. 1 minute, just wait.
Hello. Okay. Yes, Akshay Bhandari. Central Board of Secondary Education. Sushant. Yes, I agree with Akshay. Central Board of Secondary Education. Okay, you get 5 points. That's the correct answer. The next question for team D. What is the full form of ATM? Very commonly used every day. Time starts now. Okay, Sushant. Hello? Let Sushant, Hello? Akshay, let Sushant say first. Let him answer first. Sushant. Automated teller machine. Akshay. हा मॅडम ऑटोमेटेड टेलर मशीन. सुशांत म्हणते ते बरोबर आहे. Okay, team D gets 5 points for this also. So with this, we come to the end of round 1. Samir, may I now request you to kindly read out the score? Team A is on 10 points. Team B has yet to open its account. Team C and Team D are on 10 points each also. Okay. So there's a long way. Don't worry, Team B. So we are moving to our second round, which is tag lines round. Tag line यानी प्रचार वाक्य. हर कंपनी एक प्रचार वाक्य यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए. तो आपको मैं वो प्रचार लाइन बताऊंगी, आपको उसका कंपनी का ब्रांड, कंपनी का नाम या ब्रांड नेम बताना है हमें. ओके, टीम ए. No one can eat just one. 15 seconds now for you to think. Okay. Who will answer first? A1, Rohan. Ma'am, can you repeat the question? Sorry. Okay, the tagline, you know, companies use taglines for their marketing their products, no? So Yeah. You hear it on radio, you hear it on TV. Yes. No one can eat just one. No one eat just one. No, ma'am, don't know. Okay, Vinayak Patil. Ma'am, it is my turn, I guess. I am A2. Doesn't matter. I'm asking all of you. Don't worry. Okay, okay. Okay, Rahul, you want to answer? Answer. I'm not sure, but it is, I think it is Swiggy. Swiggy, ma'am. I just guessing. Vinayak Patil. I don't know, ma'am. Okay, Madhav Naik. No idea. No idea. Okay. The correct answer is Lay's. Lay's. Janashri? Lay's. Lay's wafers. No one can eat just one. So now you have at least got an idea what a tagline is. Let's see the next one. The Taste of India. Which company's tagline is the Taste of India? Dhanashri, timer.
Okay. Madhav Naik. No idea, ma'am. No idea. Rohan. Amul, ma'am. Vinayak Patil. Amul. Rahul Singh. Ma'am, it is very famous in our childhood. It's Amul, the taste of India. Correct. Okay, very good. Team A gets 5 points for this question. So we move to team B now. Team B, Kiran Chechar, where is he? मैं हूँ मैम, मैं हूँ और हाँ. वीडियो भी शायद आ रहा है. Where is Yash? Yash was there Yes online. is not there. Yash got disconnected? हाँ. Okay. So the tagline for you is the complete man. Complete man. Okay. You don't know the answer? No. Okay. The complete man answer is Raymond. हाँ. I think now you should guess this because you must be listening. Yeah. You must be knowing now. Okay. The next one is Bajate Raho. बजाते रहो. Think if you want to. Ghana.com. No. So sorry मैम, गाना लगता है. No. The correct answer is Red FM. Oh, read. Must be listening to it. So we now move to team C. Team C, who is there? Vishwajit. Yeah. Sagar Khairnar. Yes, ma'am. Yeah. Two of them are there. Okay. So your tagline, first tagline is हर घर कुछ कहता है. You want to think? Take 15 seconds to think. Can't see Sagar. Yes. Can't see Sagar. He's at the bottom. He's there. Hello. Sagar, just raise your hand. Hello. दिसत आहे का माझा व्हिडिओ? Yeah. Okay. Sagar, yes. Your video is off. दिसतोय? नाही दिसत आहे. Ma'am, I know the answer. Okay. You give your answer. Ancient Hello. paint हर घर कुछ हाँ? कहता है. Huh? Ancient paint. Sagar, Yes, ancient paint. say that again properly. I didn't hear what you're saying. What is that? हर घर कुछ कहता है ना? Huh? Yes. Correct. Yes. What is the name of that company? You were saying it, but tell me again. Just repeat it. Hello. Repeat it. Why are you scared? Repeat it. हर घर ancient paint. Asian Paint. Anyway, Asian we'll give Paint, you yes. 5 points for that. Both of you said that. Asian Yes. Paint. Asian paint. So the next tagline. बुझाए प्यास बाकी सब बकवास. Time starts now. Think. So, Sagar, No idea, madam. Vishwajit, Ma'am, it's a cold drink, but I don't know exact name.
कोल्ड ड्रिंक तो है लेकिन बुझाए प्यास सलमान Anyway, your time is up. Give the correct answer, Dhanashri. मैम थम्स अप No, it's Sprite. oh Okay, so they don't get marks for this. So we move on to team D. Akshay Bhandari and Sushant. हाँ मैडम. So your tagline is the king of good times. Your time starts now. Think. विशाल मॅडम दिसत हॅलो नाहीये. हॅलो Yeah. मॅडम आणि प्रश्न वाचा. The king of good times. Sushant. Kingfisher. And Akshay. Kingfisher. Kingfisher, madam. Hey, Vishal is not visible. Who? Vishal Nawar, D4. D4 कौन? Vishal Nawar, is he there? Vishal Nawar. He has also come. Okay. Vishal, आता what is परत your दिसायला answer? Vishal. Audio Vishal. is off. Vishal. Audio on करा विशाल. Please put your sound on. Unmute it. Hello. Anyway, I don't. He's not sitting in front of the screen. So anyway, team D gets 5 points for this because it's correct. We move to the next question for team D. The last tagline for them is, "It's hot." Time starts now, Pink. Akshay, what is your answer? Subway, madam. Subway. No, D3, Sushant. Actually, I Hello? don't know. Huh? You don't know. And Vishal, where is he? Madam is Panasonic, madam. no. No. Okay. All the three India answers made. are. Hello. Hello. Yeah, say. What are you saying? Anyway, you have answered before, so all the three answers are wrong. The correct answer is Radio Mirchi. With that, we Yes, come madam. to the end of the taglines round. Samir, can you please read the score? Yeah, Team A is on 15, 1-5. Team B is on 0. Team C is 15, 1-5. And Team D is also on 15, 1-5. Okay. We still have time for the team that hasn't started to come up. We move to the next round. Dhanashri. Yeah. So this is for Team A. We are now coming to the sports topic. I'm sure it must be your favorite topic, most of you. And I'm going to ask you a question about a very famous, very popular tournament that takes place in India. So which year was the IPL started? The Indian Premier League started. I will read out the options for you. The year, in which year? So 2008, 2009,
2007, and 2006. You want to think? Take 15 seconds. Okay, Rohan, team A. Yes. Yes, ma'am. 2008. Vinayak Patil, 2008. Rahul, Ma'am, it is 18th of April 2008. Madhav, 2008. okay, all of them have given the correct answer. I said this is a very popular tournament, so everybody will know about this. Yes. So now we are coming to the second sports question to you. What is the national game of Japan? What is the national game of Japan? Options are tennis, baseball, ice hockey, or sumo wrestling. Your time starts now to think. Madhav Naik, A3, Madhav Naik, please answer. Tennis. Rahul Singh, Baseball. Vinayak Patil, Baseball. Rohan. Ma'am, D option. Sumo wrestling. Okay, Rohan has given the correct answer, so his team gets 5 points. Thank you. So now we move on to team B for their sports questions. Yes, The lone participant is here. Kiran, all the best. Who was the first woman to get an Olympic medal? कौन सी पहली महिला है इंडियन महिला जिसको ओलंपिक मेडल मिला है? उनके नाम है पीटी उषा, सानिया मिर्जा, आरती साहा या कर्णम मल्लेश्वरी. You can think. Madam, my answer is option D, Karnam Malleshwari. Kiran, you're speaking. I can't see you actually. There is no light on your face. Yeah. Actually, बारिश हो रहा है ना. Okay. Yeah, your answer is correct. Karnam Malleshwari. So Yeah. she is the first ever woman to win an Olympic medal. She won a bronze medal at the 2000 Sydney Olympics in the women's category 69 kg. Yeah. Post that, I guess only Sakshi Malik and PV Sindhu gets medal in 2016 Olympics. Okay, the next question. Yeah. Good, Kiran. Where is the famous boxer Mary Kom from? Which state? Okay, Manipur, Mizoram, Nagaland, or Tripura? Oh. I guess, ma'am, I will go with Mizoram. Option D. Option B. Sorry. You're sure? You just think. Since you don't have a partner, I'm giving you a second chance. Okay. Manipur, ma'am.
You have to decide and tell me what your final answer is. My final answer is Manipur, ma'am. Okay, we give you 5 points. It's correct. Thank you. We move to team C now. Okay, ma'am. Okay. I will read your question. Sushil Kumar is associated with which of the following games? Archery, swimming, athletics, or wrestling? Repeat, madam, option. Wrestling. Archery, swimming, athletics, or wrestling? Wrestling, D. No, who you don't want to take time? Who has answered? Vishwajit, Yes, miss. what is the answer? Answer is option B, wrestling. And Sagar? Wrestling. Okay, your team gets 5 points. Next question, Dhanashri. Okay. Markham is declared as the state sport of which state? Markham. Okay. Okay. Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, or Bihar? Your time starts now. Think. BR. Take your time. Okay. Sagar, Uttar Pradesh. Vishwajit, Madhya Pradesh. yes, Vishwajit is correct. The answer is Madhya Pradesh. So, team C gets 5 points for this. We now move to team D. Their sports questions. Okay. Who won the 2020 men's French Open last Sunday? फ्रेंच ओपन का फाइनल किसने जीता मेंस में? ऑप्शंस है स्टेफानोस सित्सिपास, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच. Take time to think, 15 seconds, think and then answer. Vishal? Option A is. Huh? I can't hear you, Vishal. Option A is. What is the option A? I told you I don't want only option A. I want what is option A. Okay, Akshay. Rafael Nadal, madam. Huh? Rafael Nadal, C. Option C. Sushant. My option, correct answer is Rafael Nadal. No, your answer is wrong. The correct answer is Novak Djokovic. He won last Sunday. The second question, Team D in sports. This is easy again. Which team has won the maximum number of IPL tournaments till now? I will read out the names. Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Mumbai Indians, and Sunrisers Hyderabad. Take time and think. 15 seconds.
सुशांत, okay. Sushant, you want to answer? Mumbai Indians. Akshay Chennai Super King, madam. and Vishal. Mumbai Indians. Okay, two of them have given the correct answer. Mumbai Indians is the right answer. So with this we come to the end of the sports round. Samir, please read out the score. Team A is on 25, 2-5. Team B is on 10. Team C is on 25. Team D is on 20. Okay. A and C are going neck to neck. Yeah. So now let's move to another favorite of your topics. The Bollywood round, Bollywood questions round. Wow. Okay. So team A. I'm reading this question. Who is the singer of the song? Hear properly. Neela Asma Ho Gaya, Rang Barse Bhige Chunar Wali, and Holi Khele Raghuvira. Who is the singer of all these three songs? It is one singer only. So who is that singer? Your time starts now. Okay, Rohan. Suresh Bhosle, ma'am. Vinayak Patil. Amitabh Bachchan, ma'am. Rahul Singh. Ma'am, Amitabh Bachchan. Madhav. Amitabh Bachchan, ma'am. Okay, team A gets 5 points for the correct answer. So your next question. अभी आपको गेस करना है इस फिल्म के नाम को और ये डायलॉग से आपको फिल्म का नाम बताना है और किसने ये डायलॉग बोला है. Who has said this dialogue and it's from which film? चिट में जीता पट तू हारा. चिट में जीता पट तू हारा. Your time starts now. Rahul Singh. Ma'am, I guess Sholay, 1975. Vinayak Patil. Rohan. Yes, ma'am, Sholay. Madhav Naik. Sholay, madam. The answer is wrong. It is from Andaz Apna Apna. The actor who said this dialogue is Amir Khan. Amir Khan, right. Team B. We move on to Team B. Kiran. Okay, he's there. Yes, ma'am. Yes, yes, Okay. So, Abhi, which film draws inspiration from the life and struggles of Helen Keller? Helen Keller का नाम तो सुना है. उनके लाइफ के आधार पर कौन सा फिल्म बना है, हिंदी फिल्म? मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाती हूँ. बाबुल, Who Killed Jessica,
Black and Laga Chunari Mein Daag. Yes, black, ma'am. Rani Mukherjee and Amitabh Bachchan. Yes, very good. Okay, you get 5 points. Thank you, ma'am. The second question is, अभी ये भी dialogue ही है. Everyone has the same thing. One question and one dialogue. From the dialogue, you have to guess which film it is from and who has said the dialogue. मैं dialogue पढ़ के सुनाती हूँ. दोस्ती का एक उसूल है मैडम. No sorry, no thank you. It is from, I guess, Ajab Prem Ki Gajab Kahani, and Ranveer Kapoor said that dialogue. You think, I'm giving you time. You are the only participant. Think. Don't give answer just like that. Take time. Yash is also the impact. But I'm 100% sure, ma'am, that no sorry and no thank you Ranbir Kapoor said to the Katrina Kaif and in Ajab Prem Ki Gajab Kahani. I'm 100% sure, ma'am. Who is that last participant? Yash, he is not there, no? Yash is not there? Or is Yash there? Is Yash It can there? be same dialogue on another film, but I'm sure about it. Ajab Prem Ki Gajab Kahani, Ranbir Kapoor to Katrina Kaif. No, this is from, give the correct answer, Dhanashri. मैंने प्यार किया, Salman Khan has said this dialogue. दोस्ती का एक उसूल है मैडम. No sorry, no thank you. Can be same dialogue, ma'am. Sorry, it's okay, ma'am. So, Team C. Yes, ma'am. Yeah. Vishwajit Birare and Sagar Khairnar. Yes. So I'll read the question. Which film is based on the life of wrestling champion Geeta Fogart and family? I'll give you the option. Wrestling champion जो है गीता फोगाट, उसके लाइफ पे कौन सी फिल्म बनाई गई है? चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, दंगल या जो जीता वही सिकंदर. Your time starts now. Think. Dangal. Rohan, what did you say? Rohan? Sagar, Miss Sagar. Sagar na madam. What, Dangal. ma'am? बोला. Sagar. Yes, Sagar. Dangal. What, ma'am? Okay. No, I was talking to Sagar only. Yeah. Okay. Dangal बोला मैं Dangal. Vishwajit. Option C, Dangal. Okay, Team C gets 5 points. Abhi, now even you have to guess the dialogue. Okay, who has said this and from which film it is? Dhanashri? Yeah. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा. Your time starts now. Think. Sagar. Want me to repeat that dialogue again? Vishwajit. The dialogue is played by Shah Rukh Khan in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. And Sagar?
Yes, I agree with you. Okay. Anyway, your team gets 5 points because Vishwajit gave the correct answer. Now we move to team D. Akshay Bhandari and Sushant. Yes. And Vishal Nawar. Okay. Where's the party tonight? ये गाना and Rock and Roll सोनिए, ये दोनों गाने कौन से पॉपुलर हिंदी फिल्म से है? ऑप्शंस है धूम 2, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, या डॉन 2006 वाला. Your time starts now. Team. Repeat, please. Okay, Sushant. Teacher, question repeat, please. अच्छा, ये दो गाने हैं, वो कौन से फिल्म से है? Where's the party tonight? Rock and Roll सोनिए. ऑप्शंस है धूम 2, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, एंड डॉन 2006 में रिलीज हुआ था वो डॉन. विशाल नावर. अक्षय. मैम धूम 2. विशाल. विशाल नावर. सुशांत. सुशांत. Yes, teacher. बोल ना मॅडम, बोल ना सर, काय झालं? Option हाँ, option D. ऑप्शन डी में क्या है ऑप्शन? Anyway, I think you all don't know the answer. So the correct. अलविदा ना कहना, teacher. Who is saying that? No, teacher. Huh? I am alone here. Who is saying Sushant? Who said it? Who's answered this question? Anyway, we are not giving points to team D because I don't know who has said the answer. The correct answer is Kabhi Alvida Na Kehna, but I don't know who has answered, so no points. So team D, second question for you again. One dialogue, you have to guess. Who has said the dialogue and कौन से फिल्म से है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. Your time starts now. Think. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. Okay, Akshay. Sushant. Yes, am I audible, teacher? Yeah. Om Shanti Om Deepika Padukone. And Akshay. Om Shanti Om. Okay. Team D gets 5 points for this question. And before I said, teacher, Alvida na kehna, option D. Who, Sushant? Yeah, I said, teacher, before some time. But I did not hear when I was asking, no one answered. Okay. मॅडम ते मगाशी उत्तर देत होता पण त्याचा आवाज येत नव्हता ना, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम झाला. Okay, we will give you 5 points, Chalo, even for that question. So we come to the end of
the Bollywood questions round. Sameer, please, the score. Team A is on 30, 3-0. Team B is on 15, 1-5. Team D is on 30, 3-0. But Team C is in the lead at 35, 3-5. Oh, still we have a few rounds. We don't know who the winner is going to be. So we now have a general knowledge round now. Current affairs, current. So for Team A, who's who? Team A ready? I'm asking you the question. Who is the Vice President of India? Your time starts now. So Team A, Rohan. Ma'am, Rangaya Naidu. Huh? Rangaya Naidu, yes. Vinayak Patil. Yes, Rangaya Naidu. Rahul Singh. Venkaya Naidu. I can't hear you. Ma'am, now I'm audible. Yeah, who's speaking? Rahul Singh, A2 speaking. Okay. Yeah, and We the can't answer see your is face. We can't see your face actually. now. Yeah. Yeah, the answer is Venkaya Naidu. Madhav Naik. Venkaya Naidu, ma'am. Okay. Team A gets 5 points. There's just one general knowledge question. So now we move on to, yes, M. Venkaya Naidu. He took the oath as Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha on 11th August 2017. So Team B, your question now. Yes, ma'am. Kiran. Yes, ma'am. I can't see Kiran. Yeah. मैम वीडियो तो ऑन किया है. Yes, I can see. Who is the latest Chief Justice of India? Think, विचार करो. रंजन गोगोई मैम. No, he was the earlier one. He was the earlier one. नहीं मालूम, विचार करना है और because आपका you don't have team members. I'm giving you some more time. Okay, ma'am. No, ma'am. Okay, the correct answer is Dhanashri, Justice N.V. Ramanna, who was sworn in on as the 40th Chief Justice of India by President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan on 24th April 2021. Okay. Team C. Yes, ma'am. Vishwanath Pirare and Ken, yeah. Who is the Chief Election Commissioner of India? Take time to think. Sagar. Sanjay. सरनेम याद नहीं आ रहा है. संजय. Vishwajit.
सुनील राठौड़. Yeah. No. You can Sanjay. answer. No, the correct. Sen. Okay, Dhanashree, give the correct answer. The correct answer is Sushil Chandra, who was appointed on 13th April 2021 as the 24th Election Commissioner of India, succeeding Sunil Arora. He said something Sunil, but he succeeded Sunil Arora. Okay, so Team C doesn't get any points. We move on to Team D. Akshay Bhandari, Sushant Dachan, and Nawar. Who is the Solicitor General of India? इंडिया के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सुशांत, टीचर. हाँ. तुषार मेहता. अक्षय. तुषार मेहता. हाँ मैडम, तुषार मेहता. Okay, Team D gets 5 points for this. Yes. Sushant gave the correct answer. Tushar Mehta. He was appointed earlier in 10th October 2018 and reappointed with effect on 1st July 2020 for a period of 3 years till 30th June 2023 or until further orders, whichever is earlier. Okay, with that we come to the end of round D, which is the general knowledge round. So a tough tire round, but good. Some of you scored. Samir, could you please tell us the score at the end of this round? Yeah, Team B is on 15-1-5 and Team A, C and D are tied at 35-3-5. Oh my God, this is getting very exciting. 3 ties. But don't worry, Team B, you have easy questions coming up now. Very interesting rounds. Yeah. अच्छे rounds आने वाले, easy rounds आएंगे. ये थोड़ा tough था. अभी आपको हम ले चलते हैं साउंड की दुनिया में. यस यस. साउंड राउंड रहेंगे. अभी आपको अलग अलग साउंड सुनाई देंगे, उससे आपको गेस करना है ये साउंड क्या है. ओके, टीम ए. अभी I have to explain to them what. अभी आपको ये म्यूजिक सुनाई देगा थोड़ा, उससे आपको कौन सा गाना है ये गेस करना है. ओके, प्ले द म्यूजिक अगेन प्लीज धनश्री. Your time starts now. Okay, Madhav Naik. Madhav Naik. Which was that song? Rahul Singh. Ma'am, I'm visible. No, your face can't be seen. Yeah, now we can. Yes. The answer is भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन Very good. छोटे. You've already got into the musical mode. Yes. Yeah. Vinayak Patil. यस यस. राहुलच्या बरोबर आहे. Yes. Okay. And Rohan.
Same here, ma'am. Okay, team A gets 5 points for the correct answer. Dhanushi, ऐकून दाखव. भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे. Anyone knows the film? The film was Albela. Singers C. Ramchandra and Lata Mangeshkar. Okay, the next one more you have. One more music you will listen to. Dhanashri, next one please. हॅलो या मॅम प्रत्येकाला एक एकच म्युझिक आहे. एक-एकच आहे. हो Okay. नेक्स्ट आहे. Okay. Okay, sorry. We move to the next team, Team B. Is it visible, ma'am? Yeah. Yes, Team B. Yes, ma'am. Yeah, Dhanashri, play the music. पहले एंजॉय करने दो या आंसर बोले. हाँ. पहले What is- एंजॉय करने दो या. चलो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. Okay, very good. Play the tune. Dhanashri, play it. हाँ. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि मुझे बस पॉइंट मिल जाए. Okay. Team C. Team B को 5 points मिल गए. Dhanashri, play the next music. $15 seconds to think. हवा के झोंके आज मौसम में रूठ गए. Yes. I can see everybody has gone into a musical mode. अब Yes. बहुत खुश है म्यूजिक सुन के. चेहरे खिल गए सबके. Yes. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए. Okay, Team D. Rohan, you're talking to someone. I can see that. हेलो. हेलो. Yeah. Akshay. मैं तेरे बाहों में आजा. Sushant. टीचर सेम here. Play the answer. Dhanashri. Oh, Saki, Saki. तेरी आंखों का साहिल बन, तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल. इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल. So Team A doesn't get, Team D doesn't get 5 points. So with this we come to the end. To the end of the music round. Now we'll have another sounds that you have to guess.
नाही शेवटला मॅडम ते म्हणजे टायटल माहित नव्हतं ना म्हणून ते मध्ये बोललो. बाकी काय. Dhanashree, next. Now you will use some musical instruments. आपको सुनाई देंगे. आपको guess करना है कौन सा musical instrument है. Team A. Yeah. Vinayak Patil, सतार. Rahul Singh, I guess Santur. Madhav Naik, संतूर टीचर. Dhanush, the correct answer. It is Santur. So 5 points for Team A. Team B. Next question. Yes, ma'am. Kiran. Yes, ma'am. Yeah. Guitar, ma'am. Guitar. Yes, correct answer. Good, you're doing a good job being alone. अकेले के पॉइंट कंसीडर किए गए मैम. Doesn't matter. You're putting your efforts. Good. Team C. Yes. कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है देखो सुनो. सुनाई नहीं दे रहा है किधर चल रहा है. हाँ करेंगे करेंगे. मेन म्यूजिक आपको जब सुनाई देगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको कैसे stop Dhanush. Yeah. Vishwajit. Ma'am, piano and violin. Sagar. Yes, madam. Piano and violin. Yeah, violin is the correct answer. The main instrument is violin. Yes, it is correct. So team C, आपको भी मिले 5 points. Team D. हेलो. Yeah. फ्लट बासुरी मैडम. Sushant. फ्लट बासुरी. Teacher, am I audible? Yeah. Basuri, Basuri. Okay, you're correct. Okay, we go to the next round. Musical instrument is done. अभी आपको
हाउस होल्ड, घर में जो आवाज सुनाई देते हैं उनको रिकग्नाइज करना है। ओके, हम प्ले करके बताएंगे, आप रिकग्नाइज कीजिए। हाउस होल्ड साउंड्स, टीम ए, ध्यान से सुनिए क्योंकि शॉर्ट क्लिप्स है। प्ले इट। Time starts now. Think. Madhav Naik. बेल मैम। हेलो मैम, बेल। Rahul. Ma'am, I guess alarm clock. Alarm clock. Vinayak Patil. Logged out. मॅम ते लेफ्ट झाले. हेलो हेलो Rahul Singh. Rahul Singh. हेलो क्या? येस मॅम, माझ्या फोनची बॅटरी गेली होतो. मग मी दुसऱ्या I already. हेलो Rahul and Madhav are only there. Rohan is not there. हेलो Rohan. Yeah, tell me. हा मॅम, माझा वन फोनची बॅटरी डाऊन झाली म्हणून मी दुसरा डिव्हाइस यूज करतोय. तुम्ही मला क्वेश्चन रिपीट कराल का? ओके, तुम्ही ऐकलं नाहीत का आता जे साऊंड नाही. केला? नाही, ओके, साऊंडच्या नंतर नव्हतो मी. साऊंडच्या एकाही याला नव्हता तुम्ही? नाही, साऊंड झाला होता राऊंड, डी झाला होता ग्रुप. अच्छा, आता आम्ही हाऊस होल्ड साऊंड, घरामधले साऊंडचा आवाज प्ले करेल. धनश्री, प्ले इट फॉर हिम वन्स. शॉर्ट टाइम, डोंट प्ले द एंटायर क्लिप. स्टॉप. ओके ओके, हां, कॅन आय टेल? या टेल. बेल रिंग घरातली. But I think Rahul Singh gave the correct answer. It's the alarm clock. Alarm clock, ma'am, right? Yes. Next, team B, Kiran. Yes, ma'am. Yeah, Dhanashri. ऐसा आवाज मैडम वॉक्यूम क्लीनर हो सकता है। वॉक्यूम क्लीनर नहीं, सुनना है एक बार फिर से? हाँ हाँ, एक बार। हाँ, धनश्री एक बार। ये कपड़े धोने का ब्रश जब घासते ना वो भी ऐसा ही आवाज आता है। अच्छा, पॉइंट दे देते, ब्रशिंग ही हो रहा है, ब्रश हो रहा है। यस यस, मैं मुझे लगा पहले वॉक्यूम क्लीनर से कर रहे हैं क्या। ओके, 5 points to you. टीम सी, आपके लिए अभी हाउस होल्ड साउंड। Yes. रिप्ले कर, इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लिप, सुनो बराबर। Yes, repeat, ma'am. अजून एकदा कर पाहिजे। मिरर ब्रेकिंग, ग्लास ब्रेकिंग. सागर, Yes. काचीचा ग्लास फुटण्यासारखा आवाज होतो. करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट. ग्लास ब्रेकिंग, शॅटरिंग एंड ब्रेकिंग. टीम्स डी नाउ. Yes, Dhanashri.
You want time to think? Mixer, madam. Mixer volume. Sushant? Sushant? Hello. Sushant? His mic is off. Yeah. Sushant? Sushant? Mute, unmute yourself, unmute yourself. Mixer. Okay, yes, blender mixer. Yes. So 5 points even to team D. Now, interesting, no? Are you all finding it interesting? Yes, teacher. So next. Dhanashri, next. Okay, now you will hear, आप एक एक्टर का आवाज सुनेंगे क्लिप, आपको गेस करना है किसका आवाज है. Team A. Yeah, play it. अरे ये बचपना नहीं है शेखर का. कुमार भाई नंबर 1. भाई ये तो नंबर 8 है. नंबर 1 में कौन है तेरा? है लगी है. कहाँ लगी? नहीं ऊपर नहीं. अरे किसी को लगी तो नहीं. कुमार भाई नेचर्स कॉल. तो बाहर जाओ ना गार्डन में. वहाँ तोता है, मैना है. नेचर से बातें करो. कुमार भाई. So you need time to think. No, ma'am. Okay, Rohan. Akshay Kumar. Rahul. Akshay Kumar. Madhav Naik. Akshay Kumar. Okay, team A gets 5 points. That's the correct answer. Now team B's turn. Kiran. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you have to guess this personality's voice. Yes, ma'am. कौन है ये? Play धनश्री. नहीं, देश में नहीं हूँ लेकिन मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए. सर बड़ी मुश्किल पिक्चर बनाई थी. 118 एक्टर हैं उसमें. प्रोड्यूसर बनना पड़ा मुझे. मैं बहुत एक्साइटेड थी. जब भी मुझे कोई भी गवर्नमेंट से आई गेस सम्मान मिलता है तब मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ फॉर सम रीजन. पहला नेशनल अवार्ड जो फैशन के लिए मिला मैं न्यूयॉर्क में थी. पद्मश्री मैं न्यूयॉर्क में थी. फिर अब ये नेशनल अवार्ड भी मैं न्यूयॉर्क में थी. सो आई वाज फीलिंग वेरी ग्रेट. और स्पेशली क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी. और ये मैडम अच्छा हुआ न्यूयॉर्क का बोला उन्होंने. इट्स प्रियंका चोपड़ा. ओके, करेक्ट आंसर. अकेले होते हुए भी you're doing well, हाँ? अच्छे कर रहे हो. अच्छा हुआ इन्होंने प्रियंका चोपड़ा और निक्स जोनास के साथ न्यूयॉर्क का बोली, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता. हाँ. Okay, team C. Yes. आपको भी गेस करना है कौन है ये. प्ले धनश्री. अमिताभ बच्चन का आवाज है. टीम से किसने उत्तर दिया? सागर. एंड विश्वजीत. अमिताभ बच्चन. Okay, your answer is right. It was Amitabh Bachchan singing the Aarti. Dhanashri next. Team D. Yeah. Now this question I have to ask you because otherwise I'll be lynched. I'll never be able to go, where. Two great players have retired, Anil Kumble and of course Doda, Saurav Doda Ganguly in his last test match. You played under him, you've captained him. Your thoughts on Saurav and Anil? I think it's a tough thing to do, having opinion about Saurav Ganguly and Anil Kumble. I think they are marvelous cricketers. They have
led India and they have scored for India. They have done everything. Cricket is their passion, and they have done it. ओके, दो पर्सनालिटीज की आवाज सुने अभी आपने. एक भी आप अगर गेस करते हो करेक्ट तो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे. यू वांट टाइम टू थिंक. अक्षय. अक्षय. हाँ मॅडम. हाँ उत्तर. मॅडम अनेकदा ऐकवता का मॅडम थोडं? हाँ अनेकदा ऐकवता का म्हटलं थोडं? एक मिनिट. तोपर्यंत सुशांत. टीचर ओके ठीक आहे अनेकदा ऐकवा. ओके. धनश्री एकदा थोडंसं ऐकव परत. They have proved themselves at international level. पहिल्यापासून. You will not hear the first person otherwise. Yeah. Now this question I have to ask you because otherwise I'll be lynched. I'll never be able to go, where. Two great players have retired, Anil Kumble and of course Doda, Saurav Doda Ganguly in his last test match. You played under him, you've captained him. Your thoughts on Saurav and Anil? I think it's a tough thing to do, having opinion about Saurav Ganguly and Anil Kumble. I think they are marvelous cricketers. They have led India and they have scored for India. They have done everything. Cricket is their passion. Now Akshay. Anybody? Akshay or Sushant? Yes teacher. हाँ. MS Dhoni. Which one? First one or second one? Second one MS Dhoni. First one? First one I am not sure teacher. Akshay? MS धोनी सेकंड राउंड. फर्स्ट टाइम नाही एवढं कन्फर्म सांगू शकत नाही. शुअर नाही. कन्फर्म नाही पण सांगा ना तर काय वाटतं. नाव पण एवढं शुअर नाही आहे पण दुसरा आवाज तरी धोनीच आहे मॅडम असं वाटतं. Okay, your gets 5 points. Second one is Dhoni. And it's an interview between two people. तो रवि शास्त्री इंटरव्यू ले रहे हैं धोनी का, MS धोनी का. Yes teacher, I am biggest fan of MS Dhoni. Okay, so team D gets 5 points. So I think we have come to the end. Yes, ma'am. Yeah, so now we would like Samir to read out the score and see where each team stands. In fourth place is Team B with 35. Yeah. In third place is Team D with 50. And we have a tie between A and C at 55 each. Oh, so there is a tie. Between A and C, there is a tie. Same score है Team A का 55 और Team C 55. Team D का 50 है और Team B का 35 है. तो अब हमको टाई ब्रेकर राउंड खेलना है क्योंकि विनर तो डिक्लेयर करना है आज. We are going to ask 2 questions each. 2 questions will be asked to both the teams. So we'll start with Team C first. Team C ले लेते हैं first. Okay, Team C. Vishwajit Virare and Sagar Khairnar. Okay, where's Vishwajit? Yes. Yeah. Yes. Okay, so are you ready for the tie break question? Yes, ma'am. Okay, the question है हमारा Facebook कभी लॉन्च हुआ था? Facebook कभी लॉन्च हुआ था? Which year and if possible date also? I don't know date, but of February 2004. And Sagar? Yes.
2004. That's the right answer. Sagar, in fact, Vishwajit, you gave February also is correct. February 2004, 4th February 2004. The correct answer. And one more question we will ask you. Who, किसे father of computer कहा जाता है? Charles Babbage. Charles Babbage. किसने उत्तर दिया? सागर. सागर. आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ. अभी आया? हाँ. Charles Babbage. विश्वजीत. One man is the correct answer. Charles Babbage. Charles Babbage, known as the father of computer. Yes, very good. Correct answers. Both of them are correct answers. So you have already got 10 points. So now it's the turn of team A. So now team C, C is leading with 65 points. Team A. I will ask you the question now. Yeah. Team A. Which company launched 4G services in India and when? 4G services in India and when? No Googling. Rohan? Yes, ma'am. Yeah. Jio started, Jio company, and it started from 2016. Rahul? Airtel India. I can't see your face, Rahul. Airtel India. Hello, I'm visible. Yeah. Airtel India. Okay, and when? I guess 2016. Yeah. Madhav Naik? Airtel, ma'am. 4G, Airtel. Okay. So team A also gets 5 points. Airtel, yes. 10th April 2012. Okay. So one question now. One last question. Which Indian city has is the capital of 2 states? Rohan? Yes, Chandigarh. Rahul? Ma'am, can you repeat the question? The audio is not. Which Indian city is the capital of 2 states? Yeah, Chandigarh. Chandigarh. And Madhav Naik? Chandigarh, teacher. Yes, the answer is correct. They are still tied. I can still ask them one question. One last decider question. Both the teams, I can ask one question each. Okay, team A, I'm asking you, when was Instagram launched? Instagram कभी launch हुआ था? Ma'am, 2018. Vishwajit? Ma'am, it is A, na? Team A, right? Yeah, sorry, yeah. Yeah. So it's April 2012. Who answered this? Who answered this? Team A, who answered this? Is it Rahul? Who answered it? Rahul. Okay.
Anarkali Rahul answered that. Okay. And Madhav Naik? हाँ टीचर, हेलो. Yeah. रजिस्टर टीचर. Madhav टीचर Naik. 2018 टीचर. 2018. Actually, I can give Rahul 5 points because the Android version of Instagram was launched in April 2012. But Instagram was launched on 6th October 2010. So 5 points to Team A. So they have become 70. And now the last question to Team C. उसको ये उस सामने वाले Team C. अगर वो गलत कर देंगे तो फिर हम जीत जाएंगे और आप सही कर देंगे. Yes, ma'am. Yes. Okay. You ready for the last deciding question? Yes. Vishwajit Virare and Sagar Khairnar. Okay. Yes. Okay. What does COVID stand for? COVID अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं, कोरोना, COVID. Coronavirus disease. COVID का full form. Coronavirus disease. Okay. And Sagar, Yes, madam. Coronavirus disease. CO stands for Corona, VI stands for virus, D for disease. Okay. Yes. Anyway, with all the 3 questions, all of them have answered it right. So, Samir, please read out the score. Team B is on 35, Team D is on 50, while Team A and C are the joint winners with 70 each. Yes, so I think they deserve a round of applause, everybody. Yes, so we have a joint winner. दोनों ने साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का. We had expected that there would be a tie because questions weren't very tough, but दोनों all से the 6 all did very well. We are very happy कि इतने अच्छे से आप तैयारी करके आए थे and participated well. अच्छा होता कि अगर सभी टीम्स में equal number of participants होते. Team B. Yes, exactly, ma'am. Exactly, ma'am. मुझे भी सभी टीम में 4-4 होने चाहिए था तो बहुत फर्क पड़ता. हाँ, मुझे भी ये लगा था कि जो DTP जो है डिवाइस टेस्टिंग प्रोसेस, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, अगर मेरे साथ पार्टनर्स रहते तो बहुत अच्छा रहता. मुझे लगता था जो पहले या आई एम नॉट agreeing. मैं ये नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा. तो पॉइंट you did well in spite of being alone. You did well, no problem. If you had सुशील चंद्रा, सागर, आप सुशील चंद्रा तो मेरे मन में ही था, लेकिन बस जबान पे नहीं आ रहा था. आप दोनों ने मिलके 70 मिलाए, मैंने अकेले ने 35 मिलाए हैं. तो बराबर है ना फिर. हमारा एक 35 के बराबर है, तू भी 35 के बराबर है. नहीं, वो तुम्हारा बाद में लास्ट में जब राउंड हुआ था उसके काउंट हुए थे. We will discuss later. I will now ask Mr. Sameer Latte to kindly take this forward. Yeah, thank you to all the participants. It was a very spirited contest, and unfortunately, we didn't have a full quorum of 16 participants, but Yes. perhaps next time. I would also like to inform that Snehankit will be holding such contests every year in the month of June. So kindly stay tuned to our messages around the month of May for information about future contests. And once again, thank you to the quiz master and to all the participants. Thank you for making this quiz a success. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you for giving the opportunities. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Did it?